Assalamu alaikum to all my fellows. Today I bring a very informative topic, especially for girls, because nowadays this is the most hot searching topic of YouTube. That how we can lose our weight in just 10 days or in just 15 days or in just 30 days. So I am providing you the practical experience that how you can lose the 10 kg of your weight in just 30 days by following only the simple diet. You cannot need to do the special diet. So for this purpose you just need to watch this video till the end so that you can get a very simple diet plan. I met many people and I saw many girls that they follow the diet plan in which they just drink coffees and just eating salads and quit all the rotis and chawal. But I will not prefer that type of people. No doubt they can lose the weight in a particular time period, but this is very dangerous for their health. There are a lot of adverse effect on their health, so I will not prefer that type of diet plan. So let's move toward my diet plan. जी, तो हमारे डाइट प्लान में जो सबसे पहली चीज़ शामिल है दैट इज़ प्री ब्रेकफास्ट ड्रिंक, जिसका टाइम 7 to 8 AM है। और आप इसमें ज़ीरा ड्रिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें तो मलंगा ड्रिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसमें कलवंजी ड्रिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इवन के इसमें लेमन ड्रिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ जो आपके घर में अवेलेबल है आप उसको ईज़िली अपने ड्रिंक के लिए यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ ब्रेकफास्ट, और जो आपने 8 से 10 के दरमियान लाजमी करना है। इसमें आप ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइसेस ले सकते हैं, साथ आप बॉयल एग इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास ब्राउन ब्रेड अवेलेबल नहीं है, यू कैन यूज़ मल्टी ग्रेन ब्रेड दैट इज़ अवेलेबल इन आवर मार्केट, और इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इन दिस केस इफ़ यू डोंट लाइक टू ईट ब्रेड इन द ब्रेकफास्ट और यू डोंट हैव ब्रेड्स, you can skip it with 1 cup of yogurt. So the next step is the snack step, and the timing is 11 to 11:30. I prefer that you take any green tea or any coffee, but if you don't want to take tea or drink coffee, you can use any seasonal fruit. You can take apple, you can take oranges, you can take whatever you want to take. So this is the snack time. The next step is lunch time, and the timing is 1 to 2 PM. So लंच में आप एक रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रोटी अवेलेबल नहीं है तो आप एक प्लेट चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी सालन अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। साथ आप थोड़ा सा सैलड ले लें, अगर है तो इट्स ओके, अगर नहीं है तो भी इट्स ओके। लेकिन अगर आप रोटी और चावल दोनों ही इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो आप कोशिश करें कि आप एक सैलड का बाउल ज़रूर लंच में लें, उसको स्किप मत करें। अगर आप सैलड भी इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो आप कोई भी ड्राई फ्रूट उसका इस्तेमाल करें। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ आवर स्नैक टाइम, और जो आपने 4 से 4:30 के दरमियान टाइमिंग को मेंटेन रखना है। स्नैक्स के लिए आप लोग वेजिटेबल जूस ले सकते हैं, फ्रूट जूसेस ले सकते हैं, आप लोग ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, कोई भी कॉर्न टाइप चीज़ ले सकते हैं। स्नैक इज़ स्नैक, so you can take all of these things which I mentioned. You can use coffee, you can take green tea. इसके बाद आता है जी हमारा डिनर। तो डिनर आप लोगों ने 7 बजे से पहले पहले कर लेना है। 7 बजे के बाद आप कोशिश करें कि डिनर ना करें। डिनर के लिए आप लोग रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम कर लें, लाइक हाफ़ रोटी कर लें और हाफ़ प्लेट चावल कर लें। और अगर आप कोई चिकन यूज़ करना चाह रहे हैं तो ट्राई टू टेक ग्रिल्ड चिकन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिनर। और डिनर के बाद अगर आप लोग दूध के शौकीन हैं तो आई प्रेफर आप दूध ज़रूर पिएं, और जो नहीं भी शौकीन उनको भी मैं प्रेफर करूँगी कि वो दूध ज़रूर पिएं। वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है फॉर आवर बोन्स हेल्थ। तो अगर आप दूध लेना चाह रहे हैं तो 1 कप हॉट मिल्क का इस्तेमाल करें, और उसमें आप छिलका भी ऐड कर सकते हैं, इसबगोल का छिलका। तो वो आप तकरीबन 8 से 9 के दरमियान ले सकते हैं। लेकिन अगर आप दूध नहीं पीना चाह रहे तो आप कोई भी ग्रीन टी या कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
And lastly, the most important thing that I want to add in my diet plan is this, that you should drink a lot of water by following this diet plan, plus go for a walk daily for maximum 30 minutes, or if you don't want to go for a walk, you must do exercise regularly. If you don't do exercise or walk on a daily basis, so I'm sorry to say that this diet plan will never give you any change in your weight. So this is very essential part for losing the weight. So if you follow all these instructions, time, everything that I told you in this video, you can achieve your target, plus you can become more prettier than before, because it is your responsibility to reshape your body. Thank you so very much for watching this video, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Allah Hafiz.